Good evening, everyone. Welcome all of you. Welcome to Physics Wallah. OPSC Wallah को समस्त को स्वागत. Since we know that वर्तमान जो प्रतिज्ञा दिवस चलची, that's a big offer for UPSC तरफ रो प्रतिज्ञा दिवस, and that is what जदि देखिबा कि there are so many batches which is going on. जो थ्री कि हमारा OPSC वाला तरफ योर सर्व सक्षम बैच 2.0 that is which is specially for the 2024 upcoming जो prelims आसुची, and that is only your cost. There is a flat offer in about 80% अच्छी जो थ्री कि you are availing the course only 3499, and even if OCS रो जदि देखिबो कि Aakrosh जो बैच अच्छी that is only for the prelims 2024 point, that is only 999, and if you go for the unity integrated batch that is also 1999 जेथरे कि तमरो prelims and mains batch तमे prelims how come months पाइबो. But foundation batch is here. This is your foundation batch सर्व सक्षम रे जोटा कि 3499 इथरे कि जोथरे कि तमरो simultaneous class रे objective संगे subjective your answer writing also that is also you are followed over से जगह. Next हमें देखिबा जदि RI AMIN batch जदि देखिबा SSC that is your only 699, and if you go for the Anubhag batch that is 799 also, and Adhayan OSSC CGL ପାଇଁ that is also your 699. So इत्ते सारा facility जदि मिलुची सजन इत्ते कम price रे, so definitely समस्तन ପାଇଁ गोटे जो समस्तन गोटे dreams थाए that government jobs are always your dream jobs. Everyone सब parents मान कर सेटा भी लक्ष्य था. In fact हमें भी हमारा जदि लाइफ में देखिबा कि in any country your government jobs are always preferable because of its stability, right? So definitely तो एई जो physics वाला रे गोटे जो revolutionary steps निया है to गोटे जो to make that education should be access should access to all, and खास करी competitive exams. So that is what is reflecting here. देखिए ओडिशा रे जिनसटा फिजिक्स वाला तरफ these are the initiatives have taken, right? आगु जीवा देखिबा पुणे हरि मु कहबी जेमति काली हम डिस्कस करथले, today also will discuss the another important topics, that is your earthquake, right? Earthquake जेमति काली मु बुझैतले कि yes Sumit, नमस्कार, how are you Sumit? Right. So जेमति मु काली भी तुम कहथले कि ए जो सेक्शन हमर चालची, these are the free sessions. Free sessions normally free sessions we will go for the your to give an overall idea, गोटे देबा पय हम डिस्कस करू, and एथरे जेमति स्टार्ट हेची काली जियोमोर्फोलॉजी ऊपर मु कहि दिथले जियोमोर्फोलॉजी रो को जिंस हमें स्टार्ट करू. यस गुड इवनिंग सोमित, गुड इवनिंग. जियोमोर्फोलॉजी रो बहुत सारा पार्ट हमें काली मु डिस्कस करथले, जेमति काली हम स्टार्ट करथले इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सेमति आज हम पढिबो अर्थक्वेक. अच्छा, बिफोर दैट वन लेट मी से दिस वंस, ए जो YouTube रे जो जिंस हमर क्लास हमें अरेंज करूछु, दिस इज ऑल टू गिव एन ओवरऑल फ्री स्टडिंग, गोटे ओवरऑल गोटे आइडिया दिया होची कि एमते हमें पढिबो, एंड दिस शुड बी द अप्रोच, राइट? दिस शुड बी द अप्रोच, एंड जो जिंसटा एठी करा होची एठी हमें देखु जंदी. बट ए जो बैचेस गुड़ा तबे देखु जो सर्व सक्षम हो कि Aakrosh हो कि यूनिट इंटीग्रेटेड हो, सबुथरे बाय सिलेबस स्टेप बाय स्टेप सिलेबस विल कवर दैट वन, हैला सिलेबस वाइज सब जिंस कवर हो ए बैचेस गुड़ा करे, वेदर इट इज योर OCS रो तीनटा बैच, OCS 1, OCS 2 एंड OCS 3, तीनटा हैला OCS रो जो तीनटा बैच रे थरे सिलेबस बिना, एंड इन फैक्ट इट्स every all the mentors those who are here, they are following your this your जदि हमें देखिबा कि they are following step by step your as per your syllabus. So earthquake ऊपर जानिबा again earthquake. yes नमस्कार जोस्ना, how are you? okay, बिल्कुल जदि हमें देखिबा कि earthquake ऊपर, earthquake माने कोन बुचरे पिला माने, what do you understand, what do you mean by the earthquake, right? कोन बुचो earthquake माने? yes लिखला जय जगन्नाथ, बिल्कुल प्रणाम सतीश, हाउ आर यू? बिल्कुल
तो जदि आम देखा कि प्रथम आज देखिए अर्थक्वेक नॉर्मली अर्थक्वेक माने कौन बुझो व्हाट डू यू मीन बाय द अर्थक्वेक फर्स्ट अर्थक्वेक माने कौन बुझो एनीवन कैन से यस अर्थक्वेक रो माने की कौन कहि परबो किसी एनी फीबल आइडिया भूमिकंप सतीश कोची सर अर्थक्वेक माने हला भूमिकंप ओके वेरी नाइस आउ कोन ही परियो आई एम आस्किंग हाउ अर्थक्वेक जनरेट्स जदि हम कहबी हला केमती अर्थक्वेक हुए yes Sumit how earthquake normally how earthquake generates केमती हुए केमती हम जानि चंती how the earthquake generates normally what would be the answer release of energy from inside the earth which travels in all directions very nice release of energy all direction that is which travels in all directions very nice thank you Josna thank you Satish fault plane okay so normally कौन हुए कि earthquake is the release of energy we can say the release of energy right a release of energy from from inside the earth we can say from inside the earth normally it is known as your earthquake अच्छा एठी तमे कोन देखछ एठी डायग्राम दैट इज अ डिसलोकेशन ऑफ द प्लेट्स नॉर्मली जदि एठी मोटे आ गुटे डायग्राम करछि ओके और अर्थक्वेक हमें कहि परिबा कि व्हेन द वाइब्रेशंस ओके व्हेन द वाइब्रेशंस दैट वाज that shake the shake the earth surface right तो केमती हुए the vibrations एठी हम कहबा the vibrations that shakes the right the vibration that shakes the earth okay shakes the earth known as or called as earthquake हमें ताको कौन को that is known as your earthquake बोली हमें को vibration जोड़ा shake हुए ट्रांसफॉर्म बाउंड बिल्कुल मैं डायग्राम करीबी से अनुसार so normally जदि हम डिफाइन करिबा गोटे डायग्राम रे earthquake is a motion of the ground surface normally ground surface रे गोटे motion हेता motion of the ground surface ranging from a faint tremor to a wild motions हला faint tremor गोटे हल्का tremor माने कोन होबो earthquake wave को tremor कहा को जाय earthquake आज डायग्राम करी बुझे दियो earthquake wave को tremor को जाय earthquake waves are also known as your tremors right tremors they are also known as your tremors at a wild motion capable of shaking the building which is capable of shaking the building that is called your shaking the building that is called your earthquake right again जदि मैं एठी डायग्राम करछि डायग्राम रे एठी देखो गोटे this is a plate right this is one plate let's say a single plate this is one plate let's say sudden गोटे movement हला this is one plate sudden there is a motion occurs right there is a motion supply then step re kon hobo this is first stage second stage re kon hobo there is a breakage okay dislocation there is a breakage so this is your fault plane gote jaga re rohibo this plate breaks this is ei jo force asla gote plate ta gote epodu gala a gote epode moving direction that is your this is your ei jo lala this is your fault plane breakage it is your fault plane normally it is known as your fault plane or breakage okay or breakage fault plane or breakage we can say right we can say this is the fault plane or the breakage so how it happens gote stage 1 eti thila then jetale tomar gote impact one sudden force this is an sudden force gote application hela sudden force gote padla then break hela so that is called your earthquake it is a fault plane normally just एठी देखो ए डायग्राम रे कि there is a motion of the plate ए जगह रे then एठी तमर लिखा आइची that is your epicenter focus एगुडा सब लिखा आइची बर्तमान देखिबा आगु को so एठी हम देखले कोन it is the movement of one rock right it is the movement of one rock mass against the another normally gote rock mass against the another that is movement of one rock mass and the another
Sumit, I can understand, right? Okay, yes, yes, pura likhu just hold on, hala. It is the movement of one rock mass against the another that causes vibrations. Jitla vibrations kemti hue, that is one rock mass against the other. Some of these are vibration reach the surface known as your earthquakes. এই যেটা তুমি দেখুছো যেতলে এই ভাইব্রেশনটা when it reaches to the upper surface it is known as your earthquake. Just look at here. দেখুছো এটি ହେଲା, this is earthquake when it reaches to the upper surface, that is called your earthquake. Just for example, these are called your these are your seismic waves. এটা কোয়া যায়, we can say this lines, these are your seismic waves. Seismic waves we can say, seismic waves, or we can say these are all your tremors. Tremors ako kuha jay seismic waves or tremors, right? एट तुम देखुଛ अच्छा earthquake की केबे फील करछ? Anyone of you have felt the earthquake? के केबे फील करछ earthquake को? Anyone of you have felt the earthquake? के केबे फील करछ earthquake को? Anyone of you? Clear? Okay. So earthquake normally एटी मो आगुरे डायग्राम करछि केमती एपिसेंटर. जस्ट एटी आगुरे डायग्राम देखो. देखो एटी गोटे डायग्राम करछि, डायग्राम रे आउरी गोटे क्लियर हे जो तमे कोन हुए. नॉर्मली दिस इज द अर्थ सरफेस, राइट? एटा होला तमरो अर्थ सरफेस. एटी ब्रेक हैला हैला एटी तम आउरी गोटे देखो, दिस इज योर हमरो अर्थ सरफेस. केम तमे जानिबो एपिसेंटर कोटा? ओके ओके उर्वशी, ओके एपिसेंटर कोटा जस्ट एटी तमे देखो एटी नॉर्मली कोन हुए, दैट इज एन earthquake waves. ए जगह दिस इज योर earthquake waves. This is your earthquake waves. এই জায়গায় তোমার ব্রেক খেলা. This is your called your focus. এই পার্টটা कहंती তোমার focus. ঠিক 90 ডিগ্রি হিট হবো. This এই যে জায়গাটা হবো, this is your epicenter. মনে রাখো, this is your epicenter. আর এই অ্যাঙ্গেলটা হলো তোমার 90 ডিগ্রি মনে রাখো. যেতে भी को भी earthquake हमर हुए, नेपाल earthquake हिला, दिल्ली रे earthquake हेतला वर्तमान हैला. सब जगह तुम देखियो earthquake जोड़ा हुए मैक्सिमम से जगह तुम देखियो हैला कि योर जदि तुम देखियो कि ए जगह जो earthquake हुए हैला डायरेक्ट हिट करे, एटा मन रखो अर्थ सरफेस को हिट कला बेले ताको एपिसेंटर कहै जो. से जगह को तमरो एपिसेंटर कहै जो, राइट? तो एठी हमें कोन देखिले. सो द वेव नॉर्मली कोन हुए देन ट्वाइस. अच्छा सतीश कहले कि हां सर मु फील करची दैट वाइब्रेशंस. बिल्कुल को मसिया रे फील करछु? यस. सुमित केबे फील करछो तमे earthquake टा केबे फील करछो? एनीवन ऑफ यू समस्त को सर हमें एई मसिया रे फील करछु. को इन व्हाट टाइम को केमति तमे फील करछो के मते कहि परियो? उर्वशी फील करछो केबे? सतीश सुमित के फील करछो मते को earthquakes? मु तो प्राय तो मु दिल्ली पड़ला बेले बहुत समय फील करछु. मु प्राय तो प्रति वर्ष एटलीस्ट गोटे दीटा तो निश्चय फील हेइथिबो हैला. ओके सुमित फील करछ ट्वाइस. ओडिसा रे प्राय तो हमर earthquake जोन एते नाही. ओडिसा रे जदि तमे देखिबो earthquake हमर एते बेसी नाही हैला. एते बेसी हमर earthquake नाही ओडिसा रे. अच्छा देखिबा इने 21 मे सतीश लिखला 21 मे 2014 रे 6.0 रे हितला. को जगह रे सतीश कोठी हितला? मार्च रे फील करतली सर. सोमित लिखला से मार्च एई मार्च रे ओडिसा रे एई मार्च रे हितला. काई मु तो केबे देखिनी को मार्च रे. एई मार्च रे ओडिसा रे हितला. आउ के फील करछि 21 और 6. ओके अच्छा ठीक अछि. ओके ओके earthquake हमर देखो ओडिसा रे हमर प्राय तो हमर जदि हम ओडिसा रे देखियो ओडिसा रे बेसी हमर earthquake फील हुएनी, राइट? ओडिसा टा हमर बहुत गोटे स्टेबल रॉक हैला. ओडिसा टा जदि हम देखियो इट्स एन वेरी स्टेबल रॉक ओडिसा रे हैला. ओडिसा रे देखियो जदि जोन बेसिकली ओडिसा जदि देखियो जोन 2 हैला. हम जदि ओडिसा रे देखियो जोन 2 earthquake हैला.
अर्थक्वेक जोन जदि हम देखियो अर्थक्वेक जोन राइट ओडिसा रे जदि देखियो अर्थक्वेक जोन टा हमर केते 2 जोन टिक माने वेरी हल्का रिस्क हला वेरी लो रिस्क बिल्कुल न थाए ओके ओडिसा रे फील करछ ओके वेरी गुड ठीक अछि ओडिसा रे हमर इते न थाए फील हुए अच्छा हमें आगु जिबा पुनी देठी हमें देखिले कि फोकस कोडी को आजे फोकस हला जोडा जेतले प्लेट टा ब्रेक होउची सेटा को फोकस को जिवो एई पॉइंटर तमे देखो जेतले तमरो एठी दिस इज आल्सो फोकस एई जगाटा फोकस माने एठी प्लेट ब्रेक्स होउची हियर द प्लेट ब्रेक्स हला हियर द प्लेट ब्रेक्स किछ लेखा मु पढी कोनी रे तळे रहि जाउची मते गुड इवनिंग पीयू गुड इवनिंग सम रिटेन्स किछ ओटे लेखाटा रहउनी जूम टा बदे जूम एज बेस आई थिंक now it's okay I think okay ठीक अछि सो वर्तमान हमें देखिले कि अर्थक्वेक एई जगह रे रहउची हला पुनी आगु को देखिबा कि एई जगह रे हियर द प्लेट ब्रेक्स नॉर्मली हियर द प्लेट ब्रेक्स हियर द प्लेट ब्रेक्स हला एई जगह रे प्लेट टा कोन हुए ब्रेक्स हुए हियर द प्लेट ब्रेक्स प्लेट टा एठी दि खंड हेई जाय एई जगह रे माने ब्रेक करे आ जोटी ब्रेक करे ताको कहंती तमरो फोकस ठीक 90 डिग्री ऊपर को तमर रहइबो इट इज योर 90 डिग्री ऊपर को दैट इज योर सेटा को भाजो तमरो एपी सेंटर एटा दिस इज योर एपी सेंटर पुनी आगु को देखिबा सो नॉर्मली कोन हुए the waves are travel in all directions सब डायरेक्शन में वेव माने ट्रैवल करते the waves travel in all directions right from the focus रे समाने प्राय सब डायरेक्शन में ट्रैवल करते the waves are travel in all direction from focus which is located below the earth surface जोटा कि earth surface रो below रो हेई थाए waves कोना जोटा हम एठी देखु चंती हैला below the earth surface these are the earthquake waves these are all your earthquake waves right these are all earthquake waves हैला एठी रहंती earthquake waves normal right the area on the earth surface जोटा कि the area on the earth surface जब देखिबा perpendicularly above the focus point जोटा focus point रे perpendicularly above that is called as your epicenter हैला ठीक जोटा तुम देखुछो 90 डिग्री ऊपर को अछि that is called your epicenter normally question समझ पचारंती epicenter कोटा तमे देखि तो न्यूज़पेपर सब बाहर अरे कि आज एपिसेंटर थिला काठमांडू रे नेपाल रे आज एपिसेंटर थिला अफगानिस्तान रे कि पाकिस्तान रो जदी हमें देखिबा कि अफगानिस्तान रे कुंदुज रे कि क्वेटा रे हैला पाकिस्तान रा क्वेटा रे तो सब एई सब जो बाहर है इट इज बिकॉज़ एटा को कहंती जोटी आसी स्ट्राइक करथाय सेटू राइट ता परे वेव गुडा स्प्रेड हेताय अच्छा वर्तमान अगेन केमती जणा पड़ची केमती मापिबा हाउ वी केम टू नो दैट कि अर्थक्वेक हैला बोली को इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली गोटे इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाए द सेस्मोग्राफ हैला सेस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द पैसेज नॉर्मली सेस्मोग्राफ गोटे इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द पैसेज ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स जोड़ा जाउची ताको पैसेज करची दैट इज योर सेस्मोग्राफ जनरली that is instrument has used to measure the earthquake waves and where the magnitude is on richer scale दीटा जिनसे पचारंती रिचर स्केल तमरो मैग्नीट्यूड मापा जाय जेमति कहआ जाय कि आउट पूर्व 37 देखला सर 6.0 माने केते रिचर स्केल रे 6.0 दिस आर द रिचर स्केल राइट रिचर स्केल रे तमरो एटा थाय रिचर स्केल आ रिचर स्केल रे मेनल केते थाय 1 रु 9 पर्यंत थाय 9 माने पूरा एकदम हाईली डिस्ट्रक्टिव हैला माने बिल्डिंग भी भांगी के तळु गळी पडियो माने आई मीन माटी भितर पसियो राइट एमिति प्रकार डेवास्टेशन हुए कोडी जदि तमे देखिबो इफ यू विल सी इन द रिचर स्केल जदि तमे देखिबो राइट रिचर स्केल मैग्नीट्यूड हिसाब रे हैला एटी कोन हुए मैग्नीट्यूड अच्छा तापरे एबे आसीबा गोटे सेस्मिक वेव्स yes sir it is the magnitude रे
तापर नेक्स्ट आसो तुम सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स नॉर्मली कौन तुम ये आउट के पूर्व देखिल कि आम पढ़िले कि अर्थक्वेक वेव्स थाए है अर्थक्वेक वेव नॉर्मली अर्थ रो जदी हम सेस्मिक वेव्स देखिबा अर्थक्वेक रो सेस्मिक वेव्स नॉर्मली केते प्रकार थाए जानिबा एबे गोटे देखुछो तुम एटी कोन primary waves you can see here that is your primary waves just look at here you can see this is the primary and secondary waves आ गोटे जगह तुम एटी देखुछो okay your L waves last love waves or हैला that is love waves it actually last no L waves love it is हैला तुमर love waves सबको कहा जाए हैला love waves or L waves सबको कहा जाए सो हमें जानिबा एबे seismic waves ता केमती हुए how normally earthquake waves भी various type so normally it हम कौन लिखिबा earthquake waves right earthquake waves केमती earthquake waves there are दी प्रकार रा अर्थ है गोटे हला एटी जो तुम देखुछो L waves हला these are called your L waves ता normally अर्थ रो बाहर पटे तुम एटी देखुछो ए जो फिगर को भला देखा तुम देखुछो अर्थ रो भितरे दीटे प्रकार वेव अछि P waves आउ प्राइमरी और सेकेंडरी बट बॉडी बाहर तुम देखुछो दिस इज अर्थ रो बाहर माने बॉडी बाहर आउ बॉडी भितरे तो नॉर्मली कौन होबो गोटे हला तुमरो टू टाइप्स ऑफ वेव्स गोटे हला तुमरो बॉडी वेव्स गोटे कुआ जाय हला बॉडी वेव्स आउ गोटे हला तुमरो बाहर हला तुमरो सरफेस वेव्स अगेन दिस इज कॉल्ड योर सरफेस वेव्स बॉडी भितरे गोटे होची बॉडी भितरे को वेव्स तुम निजे मार्क करी मते कहलो डायग्राम रो के मते कहि परिबो को if you saw the diagram जदि तुम देखिछो if you see the diagram from there how you correlate which is the body waves मते कहलो तीनटा वेव लिखाई छी P S माने प्राइमरी सेकेंडरी आउ लव वेव्स आ भितर बॉडी भितरे कोटा अछि we can say yes सतीश सुमित के मते कहि परिबो बॉडी वेव्स कोटा आ भितर body waves की कहि परिबो who can say the body waves देखो very good सुमित so normally एठी हमें देखिबा जदी body waves की क्या भितर the body waves are one your primary waves P waves तक आ जाए and second S waves मन रखो P waves और S waves P for primary S for secondary yes PU very good हला P for P stands for कौन P stands for your primary waves and S stands for your secondary waves right A stands for your secondary waves मन रखो P हैला तुमर प्राइमरी S हैला तुम सेकेंडरी तो एठी तुम कोन देखुचो तापरे L जोटा अछि L सरफेस वेव्स रा तुमरो सरफेस वेव रे की अछि सरफेस रे की अछि जस्ट मते को एठी की आ भितरे सरफेस ऊपर की अछि अर्थ सरफेस रे सेटा L waves normally L waves हुआ जाए surface wave that is called your surface waves are also known as your L waves is also one by one so discuss करिवा L waves हला जने साइंटिस्ट थिले तांका ना हला लव तांका ना रे हला EL लव तांका ना रे हिची L waves he is basically a geologist हला तांका ना रे हिची L waves now come to the primary and secondary normally तमे डायग्राम खाली डायग्राम रे देखा yes L waves PU सेटा छोटो L हबनी बड़ो L लिखिलो अथरे समस्त देखिबे एटा I भलिया देखा होछ PU सेटा I लेखनी माने स्मॉल रे लेखनी कैपिटल रे लिखिलु L waves कैपिटल रे लिखो L waves हला this is your L waves we can say this is your L waves हला L waves
अच्छा नाउ सी वर्तमान अगेन मु करछि कि प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स रे अगेन प्राइमरी वेव्स में कौन देखुछ एटी पी वेव्स और एस वेव भितर तमे एटी भल भाबे मार्क करो कि पी वेव्स टा कंप्लीटली तमे देखो हला जदि मूवमेंट देखुछ पी वेव्स पास थ्रू कंप्लीटली तमे एटी देखो दिस इज योर प्राइमरी वेव्स कंप्लीटली देकी से जाउछ माने काली हम जेंति पढिथिले अर्थ रो को भितर योर क्रस्ट मैंटल एंड कोर तमे जदि एटी देखिवो दिस इज योर क्रस्ट mantle and core this is your crust, this is your mantle and this is your core hala eta la inner core and this is outer core. Very good Urvashi. Okay, L waves, yes PU, very good, yes thank you Urvashi. Okay, PU also. So it देखो crust mantle and core तमे देखुछ कि L P waves टा entirely cross कर तमे देखुछ डायग्राम बट एस वेव जोटा सेकेंडरी वेव तमे देखो भितर को जाउनी ए बाहरु पळौछ बुझ पाला क्वेश्चन पचारंती एस वेव टा कोर भितर देकी जाय पारे नी बिकॉज ऑफ योर मिनरल प्रॉपर्टीज सब लेयर रे डिफरेंट मिनरल सेटा बिहेव करे आ एटा तमर कोन अगेन समान हाइपोथेटिकल स्टडी गोटे नै छथि गोटे अजम्पशन नै छथि बिहेवियर ऑफ द सेस्मिक वेव्स राइट. दिस इज योर सेकेंडरी वेव्स, दिस इज योर सेकेंडरी वेव्स. सो हमें कौन जानले सो एठी हमें कौन लिखिले एठी हमें कौन लिखिबा p waves खाली नॉर्मल नोट रे कौन लिखिबा हमें p waves प्राइमरी वेव्स p waves can pass through all the layers, can pass through all the layers, hala all the layers even core hala एटा हम लिखि देली but even core whereas the secondary waves S waves whereas the secondary waves cannot pass through the liquid core, cannot pass through the liquid or simple cannot pass through the core of the earth. ओके परीक्षा रे एग्जैक्टली एई जिंसटा पचारंती कि प्राइमरी वेव्स टा माने सेकेंडरी वेव्स टा तमर क्रॉस करि पारे नी. सेकेंडरी वेव्स कैनॉट पास थ्रू द कोर, इट हैज गॉट रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द आउटर कोर. इवन इफ तमे जानि के रखि त कि इवन इफ आउटर कोर माने अर्थ रो जदि तमे देखिबो कि आउटर कोर रे भी से पसी पारे नी हला आउटर कोर तरफ पे पसी पारे. दिस इज व्हाट एंड प्राइमरी वेव्स कैन हला पास थ्रू द एंटायर योर थ्री लेयर्स. Yes, Sumit. Yes. है पुणी आम देखिए यदि दिस इज योर इनर कोर एंड आउटर कोर भला भी बुझ अगेन ए डायग्राम रे तुम बुझी जाओ डायग्राम जब बुझुछ तुम गोटे ओवरऑल गोटे आइडिया आजो चलो ऐसा होता है ए जिंस ऊपर ठीक अछि. बट अगेन मु तुम कहूची कि दीज आर ऑल ए जो जिंस तुम पढो ओनली द द सरफेस लेवल रा इन डेप्थ लेवल रे क्लास रे जो जिंसरा मेंटेन हुए प्रीलिम्स कम मेंस बैच रे जोटा फाउंडेशन बैच रे हो कि सब जगह रे जोटा कि तमरो एनालिसिस बेसी रहे बिकॉज ऑफ एज पर द सिलेबस एटी जेहेतु तमरो हमें एटी गोटे ओवरऑल आइडिया दिया होछ एंड ऑफ कोर्स दिस आइडिया आल्सो हेल्प यू आउट एंड जदि तमे क्लास से देखियो यू विल गेट द टोटल थरो सिलेबस वाइज विल कवर. अच्छा पुणी आगु एठी एमति कहूची कि दिस इज योर इनर कोर राइट, दिस इज योर इनर कोर राइट, दिस इज योर इनर कोर एंड दिस इज योर आउटर कोर राइट. दिस इज द थिंग इनर कोर एंड आउटर कोर राइट, इनर कोर एंड outer core normally right. अच्छा पुणी आगु जीवा तापर तमे देखुछो कि इनर कोर आउटर कोर ऊपर भीतर पुणी सेकेंडरी वेव्स हम जानले. वर्तमान नाउ लेट्स कम टू द एल वेव्स. सो एटा हला बॉडी भीतर वर्तमान तमे देखले कोन एटा these are all about p and s waves. they behave in the your body waves. But what about the surface? Here you saw here तमे देखुछो here is कि L waves normally एडम लिखुची normally the L waves और जगह ने 8 लिख दोछ
the L waves, the love waves, L waves are mainly, note L waves are mainly occurred at Koti. The L waves are mainly occurred at the surface of the earth, right? Mainly occurred at the surface level. At the surface level. They are restricted to the surface level, right? This is called L waves. L waves is also known as your love waves. That is, as per the scientist, its name is your love waves, right? L for your love waves, right? It is your L waves or love waves. Acha. Bartman mu iti gote question samasthinku pachari. Bartman we have discussed that P waves, primary waves, S waves means secondary waves, and L waves means love waves. आंको भितर आमे जो अर्थक्वेक एबे होची जेमति एबे रिसेंट हेतला दिल्ली रे अर्थक्वेक समको आस्थिला इवन इफ इन नेपाल काठमांडू पाखरे हेतला नेपाल रे पाकिस्तान रे टर्की रे अर्थक्वेक हेतला तो एमान के भितर को वेव्स रा एते डैमेज करथिबो हु कैन से यस among this my question is that among all these three waves P S and the L waves which one is more dangerous or catastrophic in nature who can say की कहि परिबो yes भाबिया प्रणाम God bless yes की कहि परिबो among की सबुटु बेसी डेंजरस P S और L कोटा सबुटु okay very good Sumit कहला कि sir your love waves sir Bhabya also told that sir it is the surface waves very nice so among this P for primary S for secondary L for love waves or the surface waves the major catastrophic waves is your L waves, surface waves. Normally, surface waves are highly catastrophic in nature. They are caused to the not only the property or material loss, also the death of the humans or the very fatals, right? So we can say the among all waves, we can say among the all types of waves, L waves are highly destructive. Highly destructive. Is it clear? Sir, surface because sir, surface because long durations and maximum damage. Right? Sir, long duration and maximum damage. Very good. Very good. बहुत बढ़िया भाभी very nice है ना so this is the all the clear cut explanations about all right so इटे हमें देखले कि among this P S and the L waves थाला love waves or the surface waves is highly catastrophic right बर्तन आगु जीवा पुनी इटी मा गुडी जिंस जस्ट खाली लिखी छी the among the wave motions of the earthquake is very complex बहुत complex था and जदि हमें देखिबा कि P waves bend sharply when they cross the center of the earth where S wave cannot the core जोटा हम already discuss करले S waves cross करि पारेनी P waves टा एठी हमरो bend हे कि पळाय हला core भीतर वर्तमान आउटे मुझे लास्ट को पढिबा this is your distribution of the earthquake normally distributions of the earthquake zones Atlas अच्छी Atlas खोलियो सब कहबी earthquake zones केमती को जगह रे जदि हमें देखिबा को जगह रे earthquake तो हमरो हुए earthquake zones distribution of the earthquake zones let us know को जगह normally जेमती circum-Pacific areas mid your Atlantic belt then African rift valley one by one so discuss करबे this is your earthquake zones को जगह रे हमरो हुए को belt earthquake belt there जदि हमें देखिबा कि world रे there are there are the segregations of three types of belt where the earthquake occurs normally if we see the majority is your circum-Pacific belt जदि तमे देखुछ समस्त के atlas को everyone please open atlas और atlas रे जदि अछि तमे मु एतरे देखि दोछि right this is the world political map you'll see here एटी तमे देखुछ circum-Pacific belt first one by one we'll discuss this one right मन देखि सुनिबा and बहुत सारा एथरे क्वेश्चन समान पचारंती that is your circum
पैसिफिक एरिया नंबर 1। अरे अर्थक्वेक जो भी जहां भी हो रहा है सबसे ज्यादा हो रहा है कहां पे? दिस इज द योर सर्कम पैसिफिक एरिया। सर्कम पैसिफिक इज द एरिया जहां पे मैक्सिमम अर्थक्वेक हैपेंस, माने इट अकर्स नॉर्मली दिस एरिया वी कैन से कि around 70% of earthquakes, 70% of earthquake, 70% of your earthquake normally happens or occur 70% earthquake occur at in this zone, occur in the circum-Pacific, in the circum-Pacific zone, in the circum-Pacific एरिया रे हैला, circum-Pacific zone रे normally एटी हेता है circum-Pacific zone normally, right? circum-Pacific zone 70%। कोठू? just look at here, just look at the map रे देखो circum-Pacific belt रे तमे कोठी देखुछ normally this is your circum-Pacific belt, normally this is your circum-Pacific belt, just look at here कितने बड़ो बेल्ट देखो this, just look at here आरंभ होइछि कोठू मैप रे देखियो न्यूजीलैंड पाखरो आरंभ होइछि, दिस इज योर न्यूजीलैंड, राइट? ऑस्ट्रेलिया पक्की अछि न्यूजीलैंड, जस्ट एटी जदि हम कहबी दिस इज योर न्यूजीलैंड, ओके न्यूजीलैंड, and here you find this is your Chile, right? here you find this is your Chile, न्यूजीलैंड पाखरो आरंभ होइछि चिली पर्यंत जाइछि, सच एन लॉन्ग भास्ट। तुम देखियो केतटा सपोज गोटे क्वेश्चन तुमको पचारला कि circum-Pacific belt mainly covers how many continents, केतरा continents को कवर करूछि, गोटेला तमर एटी देखो की कहि परिबो? माय क्वेश्चन इज दैट एटी डायग्राम देखि कि मते को एटी मु गोटे क्वेश्चन लिखुछि हैला, समस्त अटेंटिवली सडो कि द circum-Pacific belt, सपोज गोटे क्वेश्चन पचारला, suppose if they ask a question now, that question like the circum-Pacific belt or the ring of fire, eta कहंती कोन circum-Pacific belt और आको कहंती the ring of fire, Pacific ring of fire, right? ring of fire, circum-Pacific belt, earthquake belt हैला, earthquake belt basically covers how many continents, covers how many continents, we can say yes, we can say how many continents cover करछ, we can say केतरा continent cover करछ? 4, can you write which one? देखो very good, कौन कौन देखिबा एठी तमे देखुछ, प्रथम हैला ओशियानिया, देन तळ बस न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया गोटे गोटे कंटिनेंट, ओशियानिया, देन एशिया, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। जदि क्वेश्चंस तुमको पचार, these are the creative questions they might have asked, हैला क्वेश्चन पचार जो तुम देखुथबो yes, so मित लिखला साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड ओशियानिया, वेरी नाइस, राइट? तुम एठी देखुछ दिस इज योर एटी जदि हम देखिबा दिस इज योर ओशियानिया, दिस इज योर एशिया, एशिया रे तुम देखुछ द फिलीपींस, ताइवान, चाइना, जापान, कोरिया पेनिनसुला, रशिया Sakhalin cross, then they come to your North America, then South America. So entirely it engulfs the entire, that is your जदि हम देखिबा कि circum-Pacific belt, we can say this ones, right? 1, 2, 3 and 4. This is what the circum-Pacific belt, right? अच्छा, ए जगह जदि हम देखिबा कि वर्ल्ड रे को कंट्री सबुठ बेसी अर्थक्वेक कोठी फील हुए, नॉर्मली मते एने कहलो ए जेतिके प्लेस देखुछ या भीतर सबुठ अर्थक्वेक को जगह रे आसे, हु कैन से नॉर्मली तो द न्यूज़पेपर, सपोज इफ वी गो रिलेट विथ द कंटेम्परेरी वर्तमान सिचुएशन जदि देखिबा कि अमंग दिस लास्ट 10 इयर्स और लेट्स से ऑन एन एवरेज को कंट्री को कंटिनेंट रे सबुठ बेसी तमर अर्थक्वेक फील हुए, को एरिया रे, को कंट्री हैला स्पेसिफिक आउ को कंटिनेंट, हु कैन से
Yes, Sumit. Who can say? Again, I am repeating the question. Which country maximum earthquake has felt there? Second, in which continent your maximum earthquake has felt? Which continent? भाभी चिंती का आंसर दिया. Just think that हम लोग GK मतलब we are just playing as a GK. Just it's a fun only. Don't take pressurize. केतळे भी. एटा भाबन के ये मत सोचना कि ज्यादा कुछ स्ट्रेस. जस्ट किए क्वेश्चन आंसर दे पारि. देखो आंसर जदि हम देख पारिबो एनीवन shall I write or anyone can say maximum जदि देखिबो maximum if I say the maximum earthquake felt maximum earthquake felt country किए that is Japan, right? It is your Japan. Continent जदि देखि रखियो तमे continent हिसाब रे it is your Asia. Just marked it. Very good Sumit. Japan हला सबुठ तमरो number 1. Very nice Sumit. Asia continent काहे की again काहे की पूरा entire तमे जदि Pacific देखिबो Pacific रो maximum coverage Asia पटे दिख जाई छी. Pacific has crossed maximum is border margin with share its margin with your Asia. This part is your Asia. ठीक है जी? Okay, right. So it है next we have covered this one circum-Pacific belt. Now come to the next one, that is your mid-Atlantic, mid-walled mountain belt or Atlantic ridge. Mid-walled or Atlantic ridge. Now come to this one, mid and Atlantic ridge. Mid-walled Atlantic ridge re normally what are देखिबो एटी देखो diagram रे. If you see the diagram here, mid-Atlantic ridge it starts from your this Mediterranean Sea to till your Burma, right? Till Burma. Mediterranean Sea pakru till Mediterranean Sea ru pakru neki till your Indonesia Burma region. This is your right Indonesia Burma or Myanmar. Indonesia Myanmar pakru. So it have called likhiba this region mid mountain belt they right. So mid-Atlantic ridge or belt they mid-Atlantic belt they cover from Mediterranean Sea to Indo-Burma region. Simple, right? Itte board they cover such a vast region they have covered. Very good, right? Mid-Atlantic. So it is there are earthquake belt. Next come to the upper chaos last ku, that is your mid-Atlantic belt. तमे देखुचो को country आसीबा भितरे which country एट तमे देखिबो को country entire Asia रे की आसीबे जेमती तमे आउट के पूर्व देखथिले कि your Turkey को country आसीबो एपटे यूरोप रे हला जदि तमे mid-Atlantic तमे देखिबो एटी mid-Atlantic belt रे को country आछंदी mid-Atlantic belt रे आ देखुचो एटी को country यूरोप आसीबो कंटिनेंट रे यूरोप कंटिनेंट आसीबो यूरोप कंटिनेंट रे की आसीबे यूरोप कंटिनेंट रे इटली ग्रीस बुल्गारिया राइट इटली हम लिखि दोछ हला मेजर कंट्री डिटेल नै मेजर तमे हेड देखि दो यूरोप कंटिनेंट रे की आछी यूरोप कंटिनेंट रे इटली ग्रीस बुल्गारिया एमाने सब आसीबे हला इटली ग्रीस एंड बुल्गारिया. देन एशिया रे मैक्सिमम कंट्री एशिया रे आसीबे की आसीबो
टर्की नॉर्वे नॉर्वे आसीबो सुमित नॉर्वे कोठी रे अरे नॉर्वे जाके ऊपर हेलानी बाबू नॉर्वे इज हियर सुमित सुमित कोच नॉर्वे नॉर्वे आपनी रे बाबू नॉर्वे इज हियर दिस इज नॉर्वे और नॉर्वे मिड अटलांटिक बेल्ट तो आसुनी नॉर्वे इज फार बहुत ऊपर है नॉर्वे बहुत ऊपर है आइसलैंड हाउ कम यूके आइलैंड हाउ कम यू से दिस वन दिस इज योर यूके राइट दिस इज यूके दिस इज योर आइसलैंड राइट ग्रीनलैंड आइसलैंड बिल्कुल नुह दिस इज एमाने नुहंती है मेजरली योर इटली ग्रीस बुल्गेरिया अल्बानिया एगुड़ा सब आसवे है साइप्रस दीज आर द थिंग्स एमाने आसवे ठीक है no Scandinavian countries for your information there is no Scandinavian countries they are not included in your mid Atlantic belt se mane asibeni uppare rahi gala okay acha sei pakhare achi no it's not like that one dekho I'm just seeing the map just look at the map here it has more clarity just look at the map here open the Europe I'll show you mid Atlantic belt this is your Mediterranean Sea it was sea this is your sea this is your Italy Greece Albania here Bulgaria this is right and ethi dekho Norway kette upare Norway Iceland eti Norway Iceland Ireland UK Norway Iceland au upare eti Iceland upar regla upare nahi upare Iceland this ठीक है ठीक अच्छे एटी सो एटी हबनी ये दिस इज योर मेडिटेरियन बेल्ट टिल 80 पर्यंत की आसो ठीक अच्छे रोमानिया बुल्गेरिया देन एपटे की आसो एपटे जदी देखुछो तमे एशिया रे की आसो जॉर्जिया अजरबैजान आर्मेनिया टर्की ए सब कंट्री एशिया रे की आसबे इज इट क्लियर ओके राइट एशिया रे की आसबे जॉर्जिया ओके जॉर्जिया टर्की हला जॉर्जिया Azerbaijan, then Turkey, Turkey पर Iran, Afghanistan, Pakistan, हमारा पड़ोसी, then Nepal, China, southern China, India few persons India, Nepal, Bhutan, then Myanmar और Burma, Myanmar और Indonesia ठीक है Indonesia Malaysia सेपट पार्ट रे आसबे such an huge part they are covering right ठीक है last part जदी देखिबा that is KFC African Rift Valley normally this is your African Rift Valley and the extension part just look at here this is your African Rift Valley so एठी हमें देखिले पाखा पाखी एई जगह रे 20% एठी around 70% आउ एठी पाखा पाखी तमरो 20% remaining 10% तमरो remaining 10% जदी हम देखिबा African Rift Valley remaining 10% of earthquake 10% of the earthquake right 10% of the earthquake occur at the African Rift Valley very good Sumit okay 10% of the earthquake occur at African Rift Valley African Rift Valley 10% of earthquake African Rift Valley just look at here just look at the map here this is the African Rift Valley right African Rift Valley तमन देखुछो एठी right African Rift Valley normally African Rift Valley जदि तमे देखुछो just look at here African Rift Valley तमर कोड दोचे तो Rift Valley तमे देखुछो this is your East African Rift Valley लिखा आइची हला just look at here African Rift Valley तमरो एटी गोटे तमरो लेक अछि हला लेक मालावी लेक गोटे अछि अफ्रीका रा that is your Lake Malawi lake रो एटी this one A2 this is right here we saw it color change करछे देखो सो it Lake Malawi or Lake Nassa Malawi lake right
मालावी लेक और लेक नासा लेक मालावी रु तमरो आरंभ होईची एंड इट इज तमरो अफ्रीकन रिफ्ट वैली टिल ठीक अछि टिल पर्यंत को पर्यंत जाईची इट इज पूरा डेड सी देखि डेड सी इजराइल पर्यंत सच एन ह्यूज वन अफ्रीकन रिफ्ट वैली दिस इज योर राइट दिस इज योर ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली तमरो आरंभ होईची लेक मालावी लेक पुर नेकी टिल को पर्यंत डेड सी पर्यंत राइट डेड सी हला इत्ते बड़ गोटे कवर करछ लेक मालावी अच्छा ताजी तमे एटलास भी देखुछो एटलास रे भी तमे आहुरी भी क्लैरिटी तमे पाइ परे सबबळे मु कहबी जहां भी तमे पढुछो ऑलवेज रेफर एटलास राइट एटलास ऊपर एडी क्लैरिटी पूरा देछि लेक मालावी तमे देखछो लेक मालावी रे नेकी टिल हला डेड सी कोठी वेयर इज डेड सी इजराइल गोटे कंट्री अछि इजराइल पाखरे योर डेड सी इज इन इजराइल राइट इजराइल राइट योर इजराइल हला डेड सी इज इन इजराइल ठीक अछि अच्छा एडी तमे गोटे गोटे देखुछो लेक विक्टोरिया ठीक अछि लेक विक्टोरिया रे तमर गोटे एडी आछि एडी गोटे सबडू फ्रेश वाटर एटा गोटे फ्रेश वाटर लेक विक्टोरिया दिस इज लेक विक्टोरिया तमर रिफ्ट वैली अंडर आसुनी तमे जदि देखिवो डेड सी एते बड़ गोटे तमर रिफ्ट वैली अछि वर्तमान जदि देखाउ जे अफ्रीकन रिफ्ट वैली एमति फाटुछि एपटु माने एपटु को जाउछि इट इज जस्ट टियरिंग अपार्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली अच्छा नॉर्मली जदि कहा जिवा अफ्रीका रे रिफ्ट वैली जोटा होउछि फॉर्मेशन सेटा वर्तमान किछि जियोलॉजिस्ट माने समान कहउछन्ति कि रिफ्ट वैली टा आगु को एमिति होबो कि अफ्रीका को दिफाळा कर दबो यस वेरी गुड हला डेड सी बोल गला डेड सी इज इन बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन हला डेड सी ला जदि तमे देखिवो कि इजराइल नॉर्मली इजराइल पाखरे अछि बट it shares the boundary it is लिखियो very good shares dead sea shares boundary like dead sea share boundary in between Jordan and Israel हला ए दीटा कंट्री भितरे तमरो डेड सी तारो बाउंड्री शेयर करछ राइट डेड सी शेयरिंग इट्स बाउंड्री इन बिटवीन इजराइल आउ जॉर्डन डेड सी की कहा जाए सुमित पचाला कि सर ये सर मु पचार थांती एटा आपन को कि एमिति कोन पय बिल्कुल बिल्कुल देखो अगेन प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट जदि हमें देखिबा प्लेट टेक्टोनिक्स हैला प्लेट टेक्टोनिक्स रे कोन होची दैट इज एन डाइवर्जेंट मूवमेंट प्लेट टेक्टोनिक्स अपन कोन हुए सुमित पचाला सर एमिति कोन पय होची प्लेट टेक्टोनिक्स कहे तीन प्रकार प्लेट मूवमेंट थाए गोटेला कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आ गोटेला पैरेलल मोशन नॉर्मली पैरेलल मोशंस बहुत रेयर बहुत कम हुए हैला सबडू कन्वर्जेंट देन डाइवर्जेंट सो एठी जो अफ्रीका रे होची तो अफ्रीका प्लेट ता कन्वर्जेंट हैला माने सॉरी डाइवर्जेंट मूवमेंट हैला डाइवर्जेंट मोशंस रे ये एपड को जाउची ये एपड को जाउची अफ्रीकन रिफ्ट वैली डाइवर्जेंट मोशंस रे एपड को जाउची अगेन एटा पुनी कोन पे हैला डाइवर्जेंट मोशन निश्चित रूपे जियोलॉजिस्ट माने देयर इज एन बिलीफ करछनी कि निश्चित रूपे गोटे गोटे सडन फोर्स हेची जोटा कि अफ्रीका रा एपड पार्ट एमती उठी जाइछि राइट ए पार्टा उठी जाइछि आ एटा ब्रेक हे जाइछि ता परे कोन होछि एटा पुनी मेंटेन होछि एज ए डाइवर्जेंट मूवमेंट हे बुझि हला हला द वी कैन से करेंटली एडी नोट लिखछि करेंटली बिकॉज ऑफ द करेंटली हला बिकॉज ऑफ द और करंट स्टडी currently or current study as per study currently as per study the due to shortly लिखि दोछि due to divergent movement due to divergent motion the African plate for the tearing apart further tearing apart हेले ठीक अछि ओके सांघातिक जिंस ये ओके ओके ठीक अछि ताले मैं एतिके हम जानले वर्तमान दीटा टिके क्वेश्चन कर दवा ठीक अछि सो एटा बुझिलो अफ्रीकन रिफ्ट वैली
कि केते लंबा पाखापाखि एठू नहीं कि पूरा ऊपर पर्यंत जाउची आउ सांघातिक लिख ओके सो हाउ इट बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट मोशंस माने केमती डाइवर्जेंट माने दिस इज गोटे हला एपट प्लेट आर मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन दिस इज योर डाइवर्जेंट मन रख हला डाइवर्जेंट माने दिस इज योर डाइवर्जेंट राइट plate 1 this is plate 1 and this is your plate 2 so plates are moving in opposite direction we can say right plates are moving in opposite direction this is called your divergent याडू हला ठीक अछि क्वेश्चन किछि करबा लेट्स गो फॉर फ्यू क्वेश्चंस हला करिकि देन हमें वाइंड अप करबा ठीक अछि प्रैक्टिस क्वेश्चन करबा कोन कोन अछि वेरी इजी राइट जस्ट अ मिनट मुठी के पानी पी दो जस्ट वन सेकंड है क्वेश्चन करो एटा the number indicating intensity of an earthquake on a Richter scale range between 1 to 7 1 to 8 1 to 9 1 to 12 केते रहउची Richter scale रे we can say number indicating Richter scale रे number indicating the intensity of an earthquake that ranging between kete we can say 1 to 7 1 to 8 1 to 9 1 to 12 कोटा रहइबो yes anyone can say everyone participate करो किसी अरे बोलो ठीक हो समस्त करो इतने कौन अच्छी असुविधा nothing P who said it 1 to 9 Sumit also 1 to 9 so everyone goes for your C okay yes that's absolutely correct it is neither A neither B neither D answer is your C is the correct answer this is your 1 to 9 right 1 to 9 is the correct answers where it indicating the answer intensity that is your 1 to 9 basically next S waves माने secondary wave S wave cannot pass through which part of the earth को part of the earth रे जाइनी crust mantle core and then B and C crust mantle core and B and C S wave cannot pass through which part of the earth crust mantle core and B and C yes we can say question number 2 की कहबो yes समझ को D कोचो both B and C mantle और नहीं की right D कोचो but actually जब तमें आंसर देखियो it is neither A neither B neither D answer is your again C it is your core दे की पास करे mantle दे की क्रॉस करे और ठीक है पूर्व में सेटा बुझेइथिली कि आउटर कोर पर्यंत तार लिमिट आउटर कोर रु भितर को पसी पारेनी एक्स वेव कैनॉट पास थ्रू द आउटर कोर from till outer core it reaches है ना it cannot penetrate the outer core so simple answer is C right third question करो 3 number question करो है ना बड़ा question है करो एटी consider the following statements regarding the earthquakes right okay consider the following regarding the earthquake an earthquake shocks are generated at a point known as your epicenter the point of origin shock may be within the crust or the mantle hela practice karo the more earthquake prone areas the merging of the tectonic plates ki kahibo answer kahilo 1 2 3 all are correct 1 2 1 2 1 3 2 1 3 yes padi karo questions shocks are generated at a point known as your epicenter right
Then the points of origin shock may be within the crust of the mantle. 3 है D. Sumit kochi 3D. Okay. D docho. Anyone else? Yes, correct. जदि हम आंसर देखिबा कि the earthquake shocks are generated at a point known as your epicenter. 80 भूल हे गेला. This is your wrong. This is your focus. Right? So statement 1 is wrong. Point of the origin of the shock may be within the crust of the mantle. Absolutely correct. This one. है it is beneath था जोटा कि 60 to 60 किलोमीटर below था 60 और 120 भीतर. Then the more the earthquake prone areas, marginal tectonic plates. बिल्कुल 2 answer. तो answer is your D for Delhi. ठीक है answer is your D for Delhi. Okay, very good. 3D. Okay, last और दूसरा question करे दूची. The lines of joining the place of the equal intensity of seismic waves are known as कौन कहवा? Seismic lines, isoseismic lines, isogonal lines, isogonic lines. We can say the lines of the lines joining the place of equal intensity. Seismic line, isoseismic lines, isogonal lines, then isogonic lines. We can say. Intensity of seismic waves. How to prove intensity of seismic waves? We can say intensity of the seismic waves. Sumit answer dala. Pihu, Sumit, समस्त answer दोचो. B बोले answer दोचो. Yes, it is correct. It is your isoseismic. Iso माने equal. मन रखो. Right? The very meaning of iso means your equal. मन रखो. Right? Isoseismic means your answer is your B for Bombay. Right? Answer is your B for Bombay. So this is the correct answer. Very good. Iso means your equal. Right? Very nice. Very nice. Okay. Last question. Tsunamis are originated due to sea waves, earthquake, hurricane, rotation of the earth. कौन है परिवार? How the tsunamis are generated? केमती tsunami generate होचे? How the tsunamis is generated due to your sea waves, earthquake, hurricanes, and rotation of the earth are originated. Answer dalo. 5 pro. Sumit Kochi, B. Anyone else? Few others. You are also. Knowledge is bliss. Wow, very nice guys. बढ़िया ना? बहुत बढ़िया. Then yes. जदि हमें देखिबा answer is actually neither A, C, D. Answer is your B. It is the earthquake. मन रखो. Ocean रे जो earthquake होची generate होची ocean plate रे convergence. जेमती जापान रे tsunami जैसे. Most of the cases if you see in Japan, tsunamis are coming. Why? Because Japan is located in a very convergent place. It's a very your sensitive your zones like your earthquake zones. So where the margin of Pacific plate and the Asian plate, they are always colliding. Even if there are many small plates, earthquake small subplates are there, they are also converging. So that is what the Japan re jo earthquake ase, say earthquake ru waves ta ase upur jetale, that is called your tsunami. Tsunami is a Japanese word. It means high rising sea waves. ठीक अछि? Okay, okay, very nice. ठीक अछि? आज पे एतिकी. Again we'll meet again. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. I hope these sessions will you all enjoy the sessions and you will learn something. Again we'll meet again. Thank you so much everyone. Okay, any questions before I culminate? Okay, thank you so much. Thank you Piyu. Thank you Sumit. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you Satish. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Thank you. Good night. Good night all.